Hello guys, welcome back to on my YouTube channel. And today is 26th of January, and we have actually Sierra Fest, which is currently going outside. I think you can hear. And actually, Sierra started on 24th of January, and it is basically 3 day of event. And today is last date. And I recorded a video on 24th of Jan and 25th of Jan as well, and I will merge both video in the single my YouTube video. So now I am going to outside, and I will try to capture some beautiful video and amazing events which is currently going outside. So now I am ready, and I am going. So I hope you will enjoy in this video, and I will request you please watch full video till the end, and I will try to keep this video also like short, like 6 to 7 minutes, not more than. So thank you and stay tuned. My father told me I was timid child. At the school they said I had no style. I was dreaming to be those cool kids, but I can't afford my whole teenage life. Now I've been many places, all these years I used to cry overnight, but now I'm not gonna fit. I guess the star that show me where I go, just like a new you were. And I'm flying sounds and sounds and smiles. Oh, we're coming home tonight. You never know how to express your feeling, don't you? Oh, we're coming home tonight. My father told me I was born to run. Long way from home, he never doubt peace, son. Don't call me back until your dreams come true, but I pray for you, be always by your side. Now I've been many places, all these years I used to cry overnight, but now I'm not gonna fit. I guess the star that show me where I go, just like a new you were. It's nothing but a simple song. Don't worry, Daddy, I ain't coming home. Are we ready for this one? Alright, let's do this one more time. Put your hands up in there, everyone. 3, 2, everybody fucking jump! So rude. Everybody fucking jump! Not just last year actually. So as I told you that I'm a dentist, I was a dentist, and then I started following music full time. And in order to do that, me and my sister, we moved to Bombay. My sister, I feel, is my best friend. I love my sister. I love her the most. I love her a lot. And this one time,
I'll tell you my song writing process. मैं अपने गिटार के साथ बैठती हूँ एंड मैं कुछ कॉर्ड्स बजाती हूँ एंड कुछ भी गाती हूँ और फिर उसको रिविजिट करके फिनिश कर देती हूँ. सो मैं ऐसे ही एक ऑडियो सुन रही थी एंड उसके अंदर एक लाइन थी, अनलाइक मी यू आर स्ट्रॉन्ग. And I instantly thought of my sister when I heard that line because I think she's the most resilient person in my life. And so I ended up writing a song about it. And then I added some lines for my mom, and I added some lines for my papa. And last night I had his dream. I lost him last year, and I saw him in my dreams last night, and he gave me the best hug. So today I want to sing Spotlight for my papa, and this song Spotlight, इस सॉन्ग का नाम स्पॉटलाइट है. All riders, put your hands up in the air. 3, 2, 1, go. Inside of me, you better watch out if your enemies are road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets cause real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored. Loves of blood and gold, always wanting more freedom from the source. They don't really listen until they feel the force of blood in. If you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart quick. You left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. When there's no exit, I'll kill when I'm desperate. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm dead. You said never let me go. You said never let me go. You said never let me go. You said never let me go.
तो गाइज जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं वीडियो को 6 से 7 मिनट रखने की कोशिश करूंगा, बट ये वीडियो थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो गया है बिकॉज आई कुड नॉट होल्ड माई सेल्फ अप टू दैट। ये प्रोग्राम ही इतना अमेजिंग था कि मैं बहुत सारा कवर करने की कोशिश किया हूँ इस वीडियो में। फॉर डे वन पे इनॉग्रेशन से स्टार्ट होता है, जिसमें फैकल्टीज और हमारे सारे जो भी स्टूडेंट हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो आते हैं। इनॉग्रेशन स्टार्ट होता है, फिर स्टार्ट होता है क्रिकेट, और उसके बाद स्टार्ट होता है फुटबॉल। तो क्रिकेट के बहुत सारे राउंड होते हैं, बहुत सारी टीम बनती है, और हमारे स्पोर्ट्स कमेटी इसको मैनेज करती है, जिसका नेम है एडीरा। ठीक है, एडीरा मतलब पावरफुल। सो स्पोर्ट्स में बहुत सारी एक्टिविटी थी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल एंड लॉट्स ऑफ द गेम। और उसके बाद शाम को फुटबॉल वगैरह होने के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना कल्चरल एक्टिविटी, जिस कल्चरल एक्टिविटी में हम स्टार्ट करते हैं पहले तो परफॉर्मेंसेस। तो वहाँ पे थी ग्रुप परफॉर्मेंस, जिसमें एक से एक अमेजिंग परफॉर्मेंस थी, जिसमें डांस परफॉर्मेंस थी, गिटार की बहुत सारी परफॉर्मेंस थी, बैंड्स थे। सो ये सारा एंजॉय होने के बाद इट वॉज फॉलो बाई दी DJ Ansika. So it was an electrifying, energetic DJ show at IIM Sirmaur at day 1. सो डे 2 की बात करते हैं हम। सो हम 2 बजे कल डे 1 पे हमने सारा परफॉर्मेंस वगैरह ख़त्म किया। उसके बाद हमको थोड़ा सा रिलैक्स मिला, लेकिन मॉर्निंग होते ही हमको नेक्स्ट स्पोर्ट्स में जाना था। तो बहुत सारे स्पोर्ट्स फिर से स्टार्ट होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स के फाइनल्स स्टार्ट होते हैं। उन फाइनल्स को हम देखते हैं, बहुत सारा मज़ा आता है। उसके बाद बीच में ट्रेजर हंट होता है, बहुत सारे दूसरी कमेटीज उनके केस कॉम्प होते हैं, फिनक्विस्ट होता है, और ये सारा होने के बाद फिर से हम एक बार कल्चरल एक्टिविटी में आ जाते हैं इवनिंग के टाइम पर। इन बिटवीन बहुत सारी अदर एक्टिविटीज चलती रहती है, जैसे ये कुछ गेम्स हैं। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास आर्टिस्ट आते हैं, लाइक टैटू आर्टिस्ट आते हैं, तो वो अपने आर्ट बताते हैं। बहुत सारे पेंटिंग के हमारे पास ऐसे स्टॉल्स लगे होते हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स लगते हैं, जिसमें डिफरेंट लोग अपनी स्किल दिखा सकते हैं, अपनी आर्ट एंड कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे रुकते नहीं है, क्योंकि इवनिंग में स्टार्ट होता है हमारा अगेन एक कल्चरल एक्टिविटी डे 2 पर, जिसमें अब हम करते हैं सोलो परफॉर्मेंस, लाइक सोलो सिंगिंग, सोलो डांसिंग। सबसे अच्छी बात IIM की क्या है कि यहाँ पर डिफरेंट स्टेट से बहुत सारे लोग आते हैं, और वो वहाँ का अपना पर्टिकुलर डांस या सिंगिंग को प्रेजेंट करते हैं। तो आप बहुत कुछ नया जानते हो उस दूसरे स्टेट्स के बारे में, राइट। और डेफिनेटली ये सारा खत्म होने के बाद हम नहीं रुकते, बिकॉज वी नीड अ मैक्सिमम एग्जॉशन। तो उसके लिए क्या होता है, फिर से डीजे नाइट होती है 2 बजे तक, 3 बजे तक हम लोग बहुत सारी मस्ती करते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। सो डे 3 की स्टार्ट होती है अगेन हम लोग की मॉर्निंग कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है, तो बैडमिंटन एंड ऑल फाइनल्स के लिए। साथ साथ बहुत सारे एकेडमिक इवेंट भी होते हैं IIM सिरमौर में। तो उसके लिए हमारे कुछ क्लब्स हैं, कमिटीज़ हैं, जो अपने केसकॉम को कराते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो होता है। साथ साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट आते हैं, लाइक IAB में हम लोग का एक इवेंट होता है, जिसमें हमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, मैनेजर से इंटरेक्शन करने को मिलता है, और बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। और डे 3 की इवनिंग स्टार्ट होती है अगेन एक बड़े से शो से, जिसका नाम है अदा, द फैशन शो ऑफ IIM सिरमौर। सो उस शो में क्या होता है, बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं, इंडिविजुअल्स बनते हैं, जो अपनी रैंप वॉक करते हैं, अपने बहुत सारे फैशन शो को दिखाते हैं। कुछ सिजलिंग परफॉर्मेंस होती है वहाँ पर, और उसके बाद हमारे पास एक मेलोडियल सिंगर आती है, जिसका नाम है वानी भसीन, जिसने बहुत ही अच्छा सिंग किया। For more updates about Sierra, please check out our Insta ID of IIM Sirmaur, Kalcom Sierra, and check out the IIM Sirmaur page also, and that will be definitely bring more amazing thoughts. So please do comment and subscribe. Bye guys. Bye.